Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss some remaining definitions from the previous topic, that is small intestine, and majorly we will discuss the large intestine. So let's move to the whiteboard. Now the last part, that is large intestine. So what happens in the large intestine? तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले एक दो चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं. नंबर वन इज़ द ileocolic sphincter. स्फिंक्टर आपको पहले भी बता चुका हूँ, इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस हो चुका है. स्फिंक्टर स्पेशल रिंग ऑफ मसल्स को कहा जाता है, जो कि ट्यूब्स के शुरू में या एंड पे या किसी जगह पे होता है, जो कि किसी भी चीज़ की एंट्री को या आउटगोइंग को कंट्रोल करता है. सो आइलियोकोलिक स्फिंक्टर हमने पढ़ा था कि लास्ट पोर्शन दैट वाज आइलियम. अब आइलियम के आगे शुरू होने वाली है लार्ज इंटेस्टाइन. तो आइलियम और सीकम, इनके दरमियान में एक स्फिंक्टर है, एक रिंग ऑफ मसल्स है, दैट इज़ कॉल्ड एज आइलियोकोलिक स्फिंक्टर. आम तौर पर लार्ज इंटेस्टाइन के में अभी आपको चल के आके बताता हूँ कि तीन मेजर पार्ट्स हैं, उनमें से ज़्यादा हिस्सा जो है वो कॉलन का है. तो समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी कॉलन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन को हम कॉलन के नाम से भी जानते हैं. तो उसी सेंस में यहाँ पर बोला गया है आइलियोकोलिक स्फिंक्टर. क्लियर? So, a sphincter or a ring of muscles present between ileum and large intestine. जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, आइलियम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो रही है, वहाँ पर ये स्फिंक्टर ऑफ मसल है, विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ materials from small intestine means the ileum to large intestine. Clear? So that is the ileocolic sphincter. इसी तरह से एक और छोटा सा एक क्वेश्चन है that is present in our syllabus, that is what is lactose intolerance? तो डियर स्टूडेंट्स, जोजुनम के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि लैक्टोज आपने पढ़ा हुआ, डेट इज़ बेसिकली अ डाइसेक्राइड, जिसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं. इसके ब्रेकडाउन के लिए, इसके मेटाबॉलिज्म के लिए, मीन्स इट्स कैटाबॉलिज्म के लिए एक एंजाइम चाहिए, दैट इज़ लैक्टेज. So some people develop intestinal gas and diarrhea due to lack of an enzyme responsible for
breakdown of lactose the enzyme is lactase। इसके एब्सेंट होने की वजह से जो हम फूड खा रहे हैं जिसमें लैक्टोज शामिल है, तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए, उसका ब्रेकडाउन के लिए ये एंजाइम होना ज़रूरी है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर ये एंजाइम मिसिंग होता है, तो चूँकि ये मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी मिल्क आइटम्स होते हैं, उनके अंदर ये मौजूद है लैक्टोज, तो डियर स्टूडेंट्स वो फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर वो गैस भरना शुरू हो जाएगी, मतलब कि ड्यू टू इनकम्प्लीट डाइजेशन ये मौजूद नहीं है। तो और ये ऐसे पेट जो है वो ऐसे भारी भारी सा महसूस होगा और फूला हुआ महसूस होगा, इसके साथ डायरिया भी शुरू हो सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसी तरह से एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स, द क्रिप्ट्स। सो the structures present at the base of villi responsible for continuous cell division, that is mitosis, in order to replace the continuously shedding of epithelial cells। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है, मींस वहाँ पर जो एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं विलाई के ऊपर, वो मुसलसल स्लफ ऑफ होते रहते हैं, शेड होते रहते हैं, ठीक है। तो वो उनकी शेडिंग से उनका नंबर कम हो रहा है, तो वहीं पर मौजूद विलाई की बेस के ऊपर मौजूद होते हैं क्रिप्ट्स, डिप्रेशन होते हैं, वहाँ पर मुसलसल माइटोसिस हो रही होती है, जो कि जो शेड ऑफ सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा होता है। तो ये क्रिप्ट्स का जिक्र भी मौजूद है, यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए मैं शो करूँगा। सो दैट इज़ अ विलस, that is another villus, so like this, or here is the lacteal, and these are the blood vessels, mean that the blood capillaries around the lacteal, and this one is the epithelial layer. So these are the crypts, this one and this one, these are the crypts। और ये epithelial layer याद रखिएगा, containing the epithelial cells, तो ये slough off होते रहते हैं। So this is a villus, clear, and this one also is villus। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको बताने के लिए कि क्रिप्ट्स क्या चीज़ें हैं। सो ये विलाई के सेंटर में यहाँ पर इनकी बेस के ऊपर मौजूद हैं ये डिप्रेशंस, इनको कहा जाता है क्रिप्ट्स। यहाँ पर एक्टिवली माइटोसिस होती रहेगी और जो एपिथेलियल सेल्स यहाँ से शेड होते हैं वो इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मिसिंग थे। अब हम मूव करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ
the large intestine. और इनके सेंटर में मौजूद हैं टाइनिया कोलाई, इस तरह से सेंटर में। You have to draw it. So this is the structure of large intestine. This is ileum, and this one is the ileocolic sphincter. और फिर यहाँ से this one is cecum. This is ascending colon. And this one is transverse colon. This is descending colon. This one is sigmoid colon. This is rectum and its terminal portion, that is anus. So this is the structure of our large intestine, and it is approximately 5 feet. मतलब इससे ज़्यादा ही होती है, लेकिन एवरेज ऑन एन एवरेज इट इज़ 5 feet in length. So these are the parts. और यहाँ पर एक और structure, this one, a finger-like process that is called as appendix. That is appendix. तो dear students, 3 major parts हैं जो हमारे बुक में mentioned है large intestine के. The number 1 is cecum, that is the first part. Then there is colon, the whole structure. This is the colon, the second part, and rectum, the third part. Okay? तो मैंने इनको enumerate भी कर दिया. Cecum, all this colon and rectum, and finally anus. Dear students, यहाँ पर large intestine में जो मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करके मटेरियल यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुँच रहा है, the material entering
large intestine from small intestine means the ileum contains large of water plus dissolved salts plus the undigested matter. Now, dear students, what happens? Water and salts. Water and salts are absorbed into blood, while the undigested matter is rejected from being absorbed as feces. Clear? Or what are feces? That's an important short question as well. The feces contain या जिसको हम स्टूल कहते हैं या जिसको हम पखाना कहते हैं, ये उसकी कंपोजिशन आपको बताने लगा हूँ. ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से. मीन्स कि जो कुछ एब्जॉर्ब होना था लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो चुका है, अब सिर्फ अनडाइजेस्टेड मैटर रह चुका है. ठीक है. सो इट्स कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 large number of bacteria. Number 2, it consists of slough of mucosal cells. Number 3, it consists of number 4, it consists of plant fiber, which we called as the dietary fiber. Number 5, it consists of cholesterol. Number 6, it consists of some water. And number 7, it consists of bile pigments. That is the composition of feces or stool. Clear? अब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो कुछ भी इसके अंदर शामिल रह गया, ये सारी चीज़ें एक सिंपल एक रिफ्लेक्स होता है दैट इज़ कॉल्ड एज डेफिकेशन रिफ्लेक्स. उसके ज़रिए जो फीसेस होते हैं दे आर रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स, मैनी यूजफुल बैक्टीरिया, बहुत ही हमारे जिनको हम नेचुरल फ्लोरा भी कहते हैं, चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा था नेचुरल फ्लोरा, जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया होते हैं. द मैनी यूजफुल बैक्टीरिया हार्बर का मतलब रहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्पेशली द कॉलन, and make vitamins. वहाँ पर वो vitamins synthesize करते हैं, especially vitamin K. Vitamin K
that is basically a fat soluble vitamin, vitamin K, and passed to the liver for storage. Clear? And finally, dear students, यहाँ पर एक और चीज़, the defecation reflex. What is defecation reflex? It is also an important short question. So, the fecal matter or feces are removed out of body from rectum to anus to outside by a reflex called defecation reflex. It is not well developed in less developed in infants. जो नौ मौलूद बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ही लेस डेवलप्ड होता है और वो जहाँ पे जैसे मर्जी वो स्टूल पास कर देते हैं, डेफिकेट कर देते हैं, एंड इट इज़ वेल डेवलप्ड in adults. Clear? And above all the adults and olds and whatever the teenagers etc etc. Infants के अलावा बाकी सब के अंदर ये well developed होता है. So इसकी रीज़न यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलो. Anus जो है it is guarded by two sphincters. यहाँ पर दो स्फिंक्टर मौजूद हैं एनस पे. ये बाहर वाले साइड पे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और ये अंदर वाले साइड पे इंटरनल एनल स्फिंक्टर. और याद रखना डियर स्टूडेंट्स आपने एक और चीज़ को, external anal sphincter, it is made up of stripped muscles. Stripped means skeletal muscles. और skeletal muscles आपको पता है they are under our conscious control, while the internal sphincter it is made up of smooth muscles, and smooth muscles they are involuntary. ठीक है, तो इसी वजह से बच्चों में या आस्ता आस्ता फिर वो लर्न करते हैं, वो जो मदर्स उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग करती हैं तो तब जाकर ये वो दे कैन होल्ड फॉर अ पीरियड. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कुछ डिसऑर्डर्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.